Hail Hydra! I'm so sorry. I'm so sorry. Avengers joke. Sorry. No Hail Hydras, only Hail KCnation. ठीक है, तो आई होप अवेंजर्स जोक आप लोगों को समझ आ गया और सबको समझ, और किसी को अगर समझ नहीं आया, anybody was there, so kindly go and have some research on Avengers so you'll know who Avengers are and who Hydra is. Alright? So जैसा कि आप लोगों ने आज के कैप्शन में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो है रिएक्शन वीडियो। बहुत ही रिसर्च करने के बाद, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने सोचा कि ऐसी कौन सी वीडियो है जो आज तक कभी किसी ने ना बनाई। बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद मैंने एक बहुत ही यूनिक आइडिया सोचा, रिएक्शन वीडियो। KCnation पे YouTube चैनल का सबसे पहला रिएक्शन वीडियो आएगा, सबसे पहला रिएक्शन वीडियो। क्या आप सब उस ऐतिहासिक मौके के लिए तैयार हैं? The historical moment would be beautiful. Wow! Also, पिछली वीडियो में मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। मैंने hit the last nail in the coffin को थोड़ा सा मतलब गलत जगह पे यूज कर दिया था। Hit the last nail in the coffin, इसका सही मीनिंग अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसका सही मीनिंग ये है कि अगर कोई काम ऑलरेडी बिगड़ रहा है उसको हमने एक लास्ट एफर्ट देके पूरी तरीके से बिगाड़ दिया, ठीक है। और मैं KCnation को बिगाड़ने वाला हूँ, ऑपोजिट करने वाला हूँ, चढ़ाने वाला हूँ। सो ये इडियम गलत था। आई एम सॉरी। उस टाइम मेरे एडिटर ने भी ऑन द सेम टाइम ही मेरी बेइज्जती कर दी थी, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि मुझे एक बार दोबारा बता दे ताकि मैं एक बार रीटेक ले सकूं। थैंक यू फॉर ट्रोलिंग मी एडिटर। अरे एनी टाइम केसी। ये सब कुछ होने के बाद तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो रिएक्शन वीडियो होने वाली है एक हॉरर रिएक्शन वीडियो। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक हॉरर वीडियो पे जो कि है लामा आर्ट्स की तरफ से। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल है अ टेरिफाइंग मॉर्निंग जॉग। चलिए देखते हैं। स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वुमन। Before heading to my local community college for classes, I'd like to wake up at around 5 in the morning. ओके। तो इसको देखने से पहले मैं एक बात बता दूं आप लोगों को। स्टार्टिंग में बता दिया कि ये एक वुमन के पर्सपेक्टिव से बोला गया है, आवाज़ लड़के की है, लेकिन असल में ये स्टोरी आप ये अपने दिमाग में सोचिए कि ये जो स्टोरी लड़की ही सुना रही है, तो मतलब थोड़ा सा इधर उधर, कोई बात नहीं, चलता है इतना। चलिए देखते हैं। For a brisk morning jog. It helps clear my head and definitely helps wake me up so I can focus in class. When I first started doing this, it was a huge hassle, but over time I grew accustomed to it, and it's now a highlight of my day. However, as time went on, I found myself becoming quite uncomfortable. Not in a You know, this is my beautiful part. I really love to go out like this because this is such a good environment, nobody to disturb you, right? Anyhow, let's see. Physical sense, but more so it was like my fight or flight instincts began kicking in seemingly at random. I'd whip my head around to see if anybody was following me or even peeking at me through the wooded park in which I ran, but couldn't see anybody. That's horrific, It didn't man. help That's that it was horrific. dark either, so even if there was somebody creeping in the dark, there was no way I could tell. As an extra precaution, I started carrying around some pepper spray in order to fend off any would-be attackers. But as time went on and that eerie sensation occurred more and more, I just couldn't bring myself to run anymore. A friend of mine, Daniel, a self-proclaimed runner himself, told me that I shouldn't worry about it. He said that the mind plays This guy himself seems too creepy to be trusted. I mean, ये खुद ही इतना डरावना है कि इस पे ट्रस्ट कैसे करें भैया। देखो, काले कपड़े, काले मतलब हर काले कपड़े वाले नहीं, लेकिन एक काली हुड्डी वाला, यस।
tricks on oneself when it can't see things clearly, especially in the dark. After being reassured by him, I decided to give jogging another go. So today, like any other day, I slapped on some black leggings, tied my hair up in a ponytail, put on my kicks, and set my music volume to full blast and headed out the door. दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर फुल वॉल्यूम पे आप करोगे तो एक वार्निंग भी आती है, कान खराब हो जाएंगे भैया तुम्हारे, क्या कर रहे हो? Felt fantastic at first and was loving the cool breeze and crisp morning air. But then, about halfway into my jog, a tall and hooded figure stepped out onto the path in front of me. Quickly, I pulled out my pepper spray and yelled at the person to leave me alone. The person quickly pulled down their hood, revealing themselves to be Daniel. भैया मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि ये बंदा कुछ गलत है, मेरे को फीलिंग्स ही आ रही है, मतलब अंदर से. I sighed with relief as he approached and laughed at how funny it was that we ran the same path. I expressed to him that I felt safer knowing he was around. Daniel, however, stepped a little too close and gave a crooked smile. He said that of course I was safe with him, as apparently I had been safe with him for weeks. The realization of what he meant quickly dawned on me as his hands began to creep their way around my waist. I screamed at him to let me go. देखा बोला था मैंने, अबे ऐसे लोग सही होते ही नहीं है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस बंदे में. तो केसी एक बार फिर सही. When prepared to spray him, but he slapped it out of my hand and proceeded to grab my throat. With strained screams, I begged him to let me go and for someone to help me. He yelled at me and tightened his grip, asking why I wasn't thankful for his watchful eyes for the past several weeks. I was stunned at the complete personality change from the one. इसका जवाब भैया तुम्हें मैं देता हूँ. तुम किसी लड़की पे छुप के देखोगे तो वो भैया उसका ध्यान रखना नहीं होता, वो creepiness होती है. Alright, it is too creepy to look at girls like that. Whatever your intentions are, man. Honestly. Gentle friend I You knew. have feelings, bro. Pretty soon I started to black out and grow weak. But just before passing out, I could hear the sounds of dogs barking and an older man screaming for Daniel to let me go. In a panic, he released me and ran back into the woods. I gasped for air before I began sobbing as the man escorted me out of the park and brought me straight to the police station. And despite my fears and reservations, I told them everything I knew about Daniel, or what I thought I knew, and what he had done to me. They immediately sent a patrol car out and told me that everything would be okay. The next day, I heard Daniel never showed up to class. He had been arrested several hours later after I left the police station and confessed to everything with a disgusting amount of self-righteousness. He was recorded as saying, "She needed me. Only I can protect her." Who knows what could have been hiding in those woods? What kind of a protection is this? Like, yeah, it is such a good idea. If a person dies, he won't be having any danger. है ना, मतलब बंदा मर ही गया तो चिंता किस बात की है भाई, उसको कौन कुछ क्या ही कर सकता है ना. सही बात है भाई. It took me a while to feel comfortable going back to school, and even then my trust in people was never the same again. I guess even the ones you were close to can snap just like that at any time. Good. मतलब नॉट अ वेरी हॉरर नहीं था ये वाला काम. Thank you for sticking. लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत मस्त था. आई लाइक्ड इट. डू सब्सक्राइब टू लामा आर्ट्स, बहुत ही अच्छा चैनल है. एंड कमेंट कीजिए कि और कौन सी वीडियोस पे मैं रिएक्ट करूं, तो मैं और वीडियोस के साथ वापस आऊँगा. और बताइए, अब से अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में इस वॉक का ख्याल रहेगा? कहीं कोई डैनियल झाड़ियों में छिपकर आपका भी तो इंतज़ार नहीं कर रहा, आपकी भी तो रक्षा नहीं कर रहा. खैर जो भी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट. ऑलराइट, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे पता लगेगा कि मैं कितने पानी में.
सो मैंने ऑनेस्टली कुछ रिव्यूज़ लिए, लाइटिंग प्रॉब्लम्स थी तो मैंने उस पर थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश की है, लेकिन इन द फ्यूचर मैं और इम्प्रूवमेंट्स लाऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए अपनी लाइफ को जियो टू द फुलेस्ट मैन। केसी साइनिंग ऑफ।